hello, and welcome back to the Bowling Sisters, and we are back again. And today we are talking about the game, which is the game week, which is happening about game week 12. तो मेरे साथ sister है. After a long period of time, we both are sharing screens. Schedules ऐसे हैं कि you also guys know that getting onto one screen slightly becomes tough. So today finally I've roped him in, and I have to literally rope him in. कि मेरे को उसको खींच के लेके आना पड़ता है कि आके हमारे साथ अपना थॉट्स शेयर करे. So starting off, sister, first of all, I have to ask you this: United versus Spurs, and more important, जो 89th मिनट में एक्शन हुआ, what are your thoughts on it? पहले गेम के बारे में and that action, do you feel that was a big disrespect? And तेरी मेरी इस पे personally इतनी सारी discussions हो चुकी हैं. You and I have had arguments about it. तो पहले ये बताओ कि तेरे को क्या लगता है कि क्या ये जो एक्शन हुआ उसके लिए रिएक्शन एंड प्लस क्या परफॉर्मेंस ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड इज दैट हिज फैग एंड एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. Sure. Thank you, sister. Hi, guys. So, sister, as you correctly started off, पहले कि तो तेरे को मेरे को pull in करना पड़ा. You already made me a busy man, but ऐसा कुछ भी नहीं है. Like we both are there for the audience. हम अपना अपना चीजें लेके आ रहे हैं. And yes, it's been a long time since we both are sharing the same stage together. Correct. So, sister, coming to your question. So talking about the last game, it was, I think, if we talk first about the game, I think it was the best performance of Manchester United under Erik ten Hag. They have had good wins under Erik ten Hag. I think against Liverpool it was very good. Against Arsenal it was also pretty good. Good result, I would say. But I think if we talk about the complete performance, I think वो last night की performance थी. So it was as if that Spurs didn't turn up. ऐसा लग रहा था. But to be honest, the credit has to go to Manchester United because they didn't allow Spurs to actually do what they generally do in their games, because they have a very counter-attacking style, which United also has. But it was quite intriguing that the pressing which was happening. Fred was man of the match for me last night. He performed admirably well after having a devastating kind of a night against Newcastle. He missed a sitter. He missed an open goal against Newcastle. That should have been 3 points to Manchester United. He missed an open goal. So Fred, I think it was. I don't know. This Fred, I don't know when this Fred turns up, because ये वाला Fred था जो कल रात को आया, वो तो एक्चुअली में लग रहा था कि he is a person जो कि सेंट्रल मिडफील्ड के अंदर यूनाइटेड के लिए खेल सकता है. But again, then we see the next week we might see a Fred जो कि ओपन गोल्स मिस कर रहा है या passes नहीं दे पा रहा है kind of. So I think उस मामले में it was a very positive result for Manchester United. Talking about the goals, I think पहला it was slightly I would say lucky, that deflected goal for Fred, but I think that was well deserved, because if you see the first half itself, first half के अंदर the way United dominated Spurs, I think it was imperative that they got something to show out of that performance. Right. So I think that first goal was well deserved, yet it was a bit lucky. If I talk about the second one, Bruno, I think finally broke his deadlock. बहुत टाइम से मैनचेस्टर यूनाइटेड, या बहुत टाइम से मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस बोल रहे थे कि ब्रूनो इज परफॉर्मिंग नॉट कंसिस्टेंटली वेल, ऑल्दो लास्ट फ्यू गेम वीक्स में उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हुई है. ही इज द क्लब कैप्टन, ही नीड्स टू टेक एवरीथिंग एंड नीड्स टू लीड बाय एग्जांपल. But again, I think that second goal was nice. I would still talk about before coming to the end of the game what happened in the 89th minute. But I'll still talk about one more thing which I think is still a problem for Manchester United, which is that their lack of finishing. They don't have a finisher. And when I say they don't have a finisher, I think I'm just focusing on the starting 11 which played yesterday. They don't have a finishing capabilities over there, because if you talk about the third goal, which was disallowed because of offside, I think Bruno Fernandes, that was really childish. When you have an open space and you are still offside, that shows that you don't have that much of a finishing capabilities which a striker will have. So I think that is one point of concern, because yesterday the way United played, had it been City, had it been, for example, even Liverpool, I think with those many chances and with those many opportunities, I think they would have banged in 5 or 6 goals. Correct. So I think on that front they need to still focus on. And finally, coming on to that 89th minute, what transpired. So see, obviously we are talking about one of the greatest players of all time. Obviously, he is not going to be happy. Dropped to the bench.
not being brought on. But I think so let's try and just dissect this situation. So firstly, if you talk about not playing him, not putting him in the starting 11, he was there against Newcastle. Okay, when he's playing against Newcastle, he was brought off around 70th minute, and there was a lot of like dissatisfaction when he was brought off when he needed a goal around 71st minute against Newcastle. Yesterday he didn't even play, and then when you're leading 2-0 with 70 minutes already gone, if you then bring him, okay, then also there could be a dissatisfaction that you have made him a fringe player. So this conversation of Cristiano, whether to start, and if not starting, when to bring in, when not to bring in, I think everybody can have a different perspective. But my perspective is, yes, I think the manager is taking the shots. Manager is calling whatever he wants to do, and I think that's entirely manager's prerogative. But I feel Cristiano, I still feel he deserves a bit of, I would say, at least he deserves to be told what's his role is going to be, because I think that is something they would have had a discussion previously when he decided to stay. That if at all he is going to be a fringe player, I don't think so he'll be happy about it ever, because he's not that kind of a player. But again, 89th minute, what Ronaldo showed with him walking out, I think that was slightly disappointing. Let's be very honest, we don't deny the capabilities of the man, but I think that was slightly disappointing. And to show it, because you can show that to the manager one on one, right? You can यार show that मेरा out in front of the support staff. But I मेरा think showing that publicly, that was slightly a bit damaging. What's your नहीं, take on मेरा that? मेरा मेरा थॉट वही है, मेरा थॉट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है इस चीज में यार। एंड ये चीज शायद मैंने तेरे से डिस्कस भी करी है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, रोनाल्डो की क्या इम्पोर्टेंस है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, एंड टू अ लेवल, हाउ 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 और किस 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 लेवल पे वो इतना इम्पोर्टेंट प्लेयर रह चुका है मैनचेस्टर यूनाइटेड के आज के टाइम पे। इफ एरिक टेन हाग इज नॉट यूजिंग हिम एज हिज मेन प्लेयर, तो बहुत बड़ा इशू ये है कि यार वो एक बंदा, उसका एक ऑरा काफी होता है, उस अकेले बंदे का इतना ऑरा काफी है कि वो लोगों को खींच सके अपनी तरफ, और या डिफेंडर्स को खींच सके अपनी तरफ। समर के अंदर बहुत बड़ा इतना ट्रांसफर विंडो का डिबाकल हुआ, एक डिससैटिस्फाइड प्लेयर रखना, एंड अ प्लेयर लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभी अगर हम आज के दिन पे देखें, ठीक है, द एराज फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड मेसी खत्म हो चुका है, मोरलेस आर ऑन देयर लास्ट लेग्स। जो मैं बोलूं, ये लास्ट लेग ऑफ दैट रिले रेस इज हैपनिंग, एंड वी आर वेरी लकी टू सी बोथ ऑफ देम, एंड वी विल बी इक्वली लकी टू सी देम इन द वर्ल्ड कप। बट देन पॉइंट ये है यार कि आप, जो बंदा जा रहा है उसको उतनी रिस्पेक्ट तो दो। मैंने, एंड इस चीज में मेरे को लगता है एरिक टेन हाग इज बीइंग इज बीइंग फर्म एंड लुकिंग एट अ ब्रॉडर पिक्चर। ठीक है, वो सही चीज कर रहा है, लेकिन जैसे तूने बोला कि यार एटलीस्ट उस बंदे को बता दो, तो ही डिजर्व्स दैट मच अमाउंट, ही इज बीन अ फकिंग प्रोफेशनल फॉर सो लॉन्ग, ही इज बीन अ प्रोफेशनल फॉर 20 odd years, 20 odd years he's been बट सिस्टर एक क्वेश्चन है इसमें। हाँ, बट सिस्टर एक क्वेश्चन है, डोंट यू थिंक जब ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशन हुई थी, जब ये व्हेन रोनाल्डो टर्न्ड अप लेट, जब समर के अंदर जब टीम चली गई थी प्री सीजन पे, और उस टाइम पे वो लेट आया, और जब बात हुई होगी लाइक अराउंड लाइक हिज फ्यूचर एंड एवरीथिंग, डोंट यू करेक्ट। थिंक ये डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका होगा दैट मे बी यू आर नॉट सपोज टू प्ले ऑल द गेम्स और ऐसा कुछ? डोंट यू थिंक ये ऑलरेडी टेन हाग या यार उसकी सपोर्ट स्टाफ ने बोल दिया होगा उसको? I doubt, see, understand one thing, Sahil, अगर तुम एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर तुम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप परफॉर्मर हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस डिप हो जाती है एंड में, इसलिए और यू पिक अप एनीथिंग, इफ यू आर अ टॉप परफॉर्मर, तुम्हारी परफॉर्मेंस डिप होती है, then nobody will come to you straight forward and say, boss, you're utter shit. Nobody's going to tell you that. The only thing which is going to happen is people try and tell you in a very polite manner, and give you hints on it. If you get those hints, well and good. अगर नहीं मिलते वो hints, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर यही होगा, लाइक यू सेड, मे बी स्टाफ ने बताया, मे बी स्टाफ ने नहीं बताया। अगर स्टाफ ने नहीं बताया, इट इज टेन हाग एंड दे फॉर दैट दे ट्राइंग टू कीप द टीम यूनाइटेड, एंड वो थोड़ा सा पॉलिटिकल गेम काइंड ऑफ अ थिंग ले लो तुम उसको, अगर तुम उस हिसाब से ले सकते हो कि यार हमें हर प्लेयर को थोड़ा 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 हैप्पी रखना है, कि अच्छा मैं इसको इतना खिला सकता हूँ, मैं उसको उतना अलग, that can be the only thing which it comes to my mind to be for a player like Eric, for a player like him, यार उसको
संभाल लेंगे, मेरा कहना ये। But I think regarding that incident which happened, जिसमें he walked out हाँ and he went into the tunnel. What, हाँ, what what do you think about it? Do you think it's slightly unprofessional from Cristiano perspective, or he's just making it very evident that he's not happy? यार दोनों चीजें, मतलब ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन एक लेवल होता है, एक डिससेटिस्फैक्शन का एक लेवल होता है, उसको आप पब्लिकली दिखा सकते हो। अगर मैनेजर के पास वो अथॉरिटी है एक प्लेयर को कॉल आउट करने की, एक प्लेयर को अपना डिससेटिस्फैक्शन दिखाने का एक थोड़ी बहुत तो 19-20 है, ठीक है। आप, इट माइट बी अगेंस्ट द मैनेजर्स एथिक्स, इट माइट बी अगेंस्ट द क्लब एथिक्स, यार द प्लेयर्स आर बाउंड by a certain contract, and आपको एक तरीके से, एक लहजे से, फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, आज स्टेचर पे मैनचेस्टर यूनाइटेड है, एक स्टेचर है उनका, सो आपको एक प्रेजेंटेबल होना है। एंड ये चीज शायद बेन फॉस्टर ने अपने एक पॉडकास्ट पे भी बोली है, पॉडकास्ट जो उसका आता है यूट्यूब पे, ही सेड द सेम थिंग, that when he was at Manchester United, he had to be, there was a chip on your shoulder. The how are you presenting us? And for a player like Cristiano Ronaldo, he's done this thing all his life. He's been an utmost professional, and right now also, if agar ye, if it was you or me, we would have given a kick onto the backside and said, let it be, या हम उसको हलक के नीचे ले चुके हो, ठीक है, it would See, have been but a, मेरा वही सवाल आ रहा है कि like if he has been so professional throughout, which he हाँ has been, हाँ, right? ऐसे ही कोई 20 साल तक टॉप पे नहीं रह सकता, right? करेक्ट, He has बिल्कुल been utmost professionalism, और उसकी प्रोफेशनलिज्म पे कोई क्वेश्चन भी नहीं है। बट बिल्कुल नहीं मेरा है। एक सवाल इसी पे ही है कि ये 89th मिनट में और भी कई सारे सब्स्टिट्यूट्स थे जो कि नहीं खेले, हाँ राइट? व्हाई ही हैज टू टेक दैट स्टेप कि मेरे को वॉक आउट करना है? एंड आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज सल्किंग ऑन द बेंच। वो हाँ एंड एंड नोटिस दैट लास्ट नाइट जब डिएगो डालो था, वो टच लाइन पे आ रहा था, तो मे भी हाँ कुछ एक चिट चैट हो जाती थी, डालो के मुंह पे लगी बॉल, क्रिस्टियानो ने उसका कुछ जोक वो किया एंड ऑल दोस काइंड ऑफ जॉली थिंग्स वर हैपनिंग। बट हाँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि डोंट यू थिंक जब आप 89th मिनट तक बेंच पे हो ही आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आने की, हाँ ठीक है, अब 4-5 मिनट की बात रही है, हाँ, जस्ट वेट फॉर दैट टाइम, allow the match to end, greet your players, and then maybe show your dissatisfaction to the manager. Why to actually just again take away the spotlight and put it on yourself? हाँ यार ठीक है, अब वही चीज है ना, लाइक आई सेड, एक रोनाल्डो जैसे प्लेयर के ऊपर अगर वो एक कदम लेफ्ट का राइट भी रख दे और राइट का लेफ्ट भी रख दे, तो भी मीडिया इज गोइंग टू मेक अ, Exactly. वो इट इज गुड, Exactly. वो राई का पहाड़ बन जाएगा, इट इज टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट इन दैट मैनर। एंड सेम चीज आई थिंक सो कल भी हुई, मे बी ही वांटेड टू गो, मे बी ही जस्ट वांटेड टू गो एंड डू सुसु आल्सो, यार ये भी हो सकता है। बाय द टाइम वो आना चाहेगा, वो तब तक फुल टाइम हो गया हो, नहीं आना चाहेगा, हाउ डू यू, आप उस चीज के ऊपर आप ये बोल रहे हो Obviously. कि यार एक ह्यूमन Right. थिंग है यार, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब मेरा कहना, But what but, मेरा but थॉट what प्रोसेस, lies next? What lies next then? What lies next for United? What lies next for Cristiano? आई थिंक सो It's आई थिंक सो, it's Stamford Bridge next. हाँ It's टाइम, Stamford Bridge next. यार अब इट इज गोइंग टू बी अ टफ आस्क, क्योंकि चेल्सी का जो गेम कल हुआ उसके ऊपर परफॉर्मेंस अभी भी, लाइक आई सेड, पहले मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, एक सब स्टैंडर्ड टीम है, इट इज नॉट अ हाई स्टैंडर्ड टीम चेल्सी की जो हुआ करती थी, इट इज अ सब स्टैंडर्ड टीम, टेक्स, This is the team which has spent the most in the last transfer करेक्ट, window. यस यस, सब So how स्टैंडर्ड, can you call it a substandard? How इट can इज you call it a substandard इट team? इज अ सब स्टैंडर्ड टीम। तो क्या, तो How? अगर अगर आप सिर्फ एक एक्स एक्स जीज और एक्स वाईज और एक्स एल्स एंड एक्स एम्स के ऊपर आप परफॉर्मेंस देख रहे हो, तो यार आपका यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड कितना, So are you trying to say that transfer window ढंग की नहीं हुई? Like they have ट्रांसफर not विंडो, bought the correct player? आई थिंक सो द ट्रांसफर विंडो वाज स्टिल, अगर हम वापस जाएं चेल्सी के ट्रांसफर विंडो, आप किसको देखते हो, स्टर्लिंग, ऑबामेयांग, स्टर्लिंग से जरा सेल्फिश बंदा मैंने आज तक नहीं देखा, ऑबामेयांग से ज्यादा, मतलब ऑबामेयांग एक्चुअली में जिरूड का डुप्लीकेट है, लेकिन थोड़ा सस्ता सस्ता डुप्लीकेट ले लो, मैं जिरूड, अगर तुम मेरे से बोलो कि जिरूड और ऑबामेयांग में कौन चाहिए, आई वुड हैव सेड जिरूड, ठीक है। उसके बाद फिर और कौन आया, और भी जकारिया आया लोन के ऊपर, जो आज तक अभी तक एक गेम नहीं खेला, उसका शायद कॉन्ट्रैक्ट है, वो अभी वो लोन ही खत्म हो जाएगा, वो लायक ही नहीं है। और आई थिंक चिकुवेंका करके एक वो विंग विंग बैक है, वो अभी खेल रहा है, कुकुरिया है, अगेन लेफ्ट विंग बैक, चिलवेल के अगेंस्ट में है। आप बताओ ना, यू ऑल्सो लुक एट इट,
एक टाइम था जब चेल्सी के लिए लाइन लगती थी लोगों की। आपके पास एक ऑप्शन था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन करने का, एक मैन चाहिए था आपको जो आपके लिए प्रोलिफिक गोल स्कोरर, जो आपकी टीम में स्लॉट इन हो जाए। एक तरफ से आपके पास आ रहा है कुकुरेया या चिलवेल आ रहा है, एक तरफ से आपका जेम्स आ रहा है, क्रॉस आ रहे हैं, एक बंदा है हेडर मारने के लिए जिसके पास दैट वो ऑडेसिटी है गोल स्कोर करने की। काय हावर्ट्स को एक अच्छा सपोर्ट मिलता, पुलिसिच को एक मेंटोर मिलता। आज एक टीम के अंदर होना, एक ऑरा होना, एक प्रोफेशनल होना, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज फॉर से मे बी रैशफोर्ड के लिए है या जेडन सैंचो के लिए But है या but किसी के लिए। still, but still, like I think Graham Potter is doing a good job, right? You मैं haven't पॉटर, lost a game. नो नो, Chelsea आई एम hasn't नॉट, lost a game. मैं ये नहीं बोल रहा कि ग्रैम पॉटर इज नॉट डूइंग अ गुड जॉब। मैं बोल रहा ग्रैम पॉटर इज डूइंग अ गुड जॉब, ही कैन डू अ बेटर जॉब अगर उसकी वो सब स्टैंडर्ड टीम ना हो। एक सब स्टैंडर्ड टीम है यार, देख वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम पिछले 20 साल से फुटबॉल देख रहे हैं। 20 साल में हमने एक चेल्सी की टीम देखी है जिसके पास एक ऑरा होता है। ये ऑरा, अगर आज के टाइम पे अगर तुम मेरे से बोलो 2017 की 2017 टीम अंडर एंटोनियो कॉन्टे या 2020 2021 की टीम अंडर थॉमस टूशल जो चैंपियंस लीग जीती थी, कौन सी बेटर है? आई से 2017 प्रीमियर लीग विनिंग टीम वाज मच बेटर। व्हाई? बिकॉज उस टीम के अंदर ड्राइव थी, हंगर था, आपके पास कॉस्टा जैसा प्लेयर था, एक तरफ से हैजर्ड आ रहा था, एक तरफ से आपके पास आपके पास पीछे जेटी था, आपके पास केहिल थे, आपके पास बाकी सारे प्लेयर्स भी थे। तो अगर आप देखो कि किस हिसाब की टीम पहले थी और किस हिसाब की टीम अब है, एक सब स्टैंडर्ड टीम है। एंड जो अगर आपका कल ने, इफ यू सीन ब्रेंटफोर्ड्स गेम यस्टरडे, परफॉर्मेंस, आप चाहे आप एक्सजी पे जाओ, एक्स वाई पे जाओ, कितने गोल्स करे, कितने कितने उन्होंने टारगेट करा, कितने कुछ भी करा, दैट इज नॉट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। कितने गोल स्कोर हुए, क्या स्कोर लाइन थी, क्या पोजेशन था। But if I simply talk about, like, I know you what you are pointing out is absolutely correct कि चेल्सी की ये टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी हुआ करती थी पहले चेल्सी की टीम्स. करेक्ट। But if I have to ask you that next game is against United हाँ at the bridge, हाँ, what are your thoughts? जिस हिसाब से यूनाइटेड खेल रही है अगेंस्ट द टॉप सिक्स, वो सिर्फ सिटी के अगेंस्ट हारे हैं। चेल्सी इज बट अनदर। वो इकलौता बट वो इकलौता बट वो इकलौता अवे गेम था यूनाइटेड का. हाँ ये तो क्या सारे हो, होम गेम हुए हैं जो यूनाइटेड जीती है. आई स्टिल फील चेल्सी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्गर टीम। दे आर मिसिंग द बिग बॉय, Which जो boy? रीस जेम्स। Reece James has got just injured just last game, right? 8 हफ्ते के लिए गया भाई, पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा वो। हाँ, वो तो मुझे पता है, बट उससे पहले तो खेल ही रहा था ना वो. रीस जेम्स है, ना तुम्हारे पास कांटे है, दो बड़े बंदे, दो बंदे जो टीम को संभाल सकते हैं। जॉर्जिनियो के ऊपर उतना डिपेंडेंट हो नहीं सकते। त्यागो सिल्वा सेंटर पे रहता है, So, एक आपके so पास एस्पिलिक्वेटा है, एक आपके पास final कुकुर। final question final question to put you on the spot. Your prediction and your score line with prediction for Chelsea versus United. It is going to be a 2-1 United win. 2-1 United win. 2-1 United win. United मैं United beating Chelsea. एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे को, मैं बता रहा हूँ, गेम्स देखे हैं मैंने, द एक्सपेक्टेशन लेवल इज नॉट देयर। United, if I United comes out, if United comes out in the same manner they played against Liverpool, the same manner they played against Arsenal, it is going to be a very and same game the way they played against Spurs. कल यूनाइटेड ने अपना गेम डिक्टेट किया है एंटोनियो कॉन्टे को। एंटोनियो कॉन्टे को अपना गेम डिक्टेट करने नहीं दिया। अगर सेम चीज चेल्सी के अगेंस्ट होती है, यूनाइटेड कमिंग ऑन टॉप, हैंड्स डाउन, आई एम टेलिंग यू, हैंड्स But डाउन। again, that is the problem with United, right? Because United plays such games very rarely. यार चाहे जित रेयर हो या नॉन रेयर हो, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, हैज यूनाइटेड बीन प्लेइंग वेल अगेंस्ट टॉप सिक्स? यस दे हैव बीन, अपार्ट फ्रॉम वन ब्लिप, रेस्ट ऑफ देम देयर गेम्स हैव बीन गुड। न्यूकासल के अगेंस्ट भी गेम अच्छा था, पॉइंट्स मिस हुए, कोई नहीं, लेकिन अगर आप चेल्सी और Finisher यूनाइटेड के नहीं है. अगेंस्ट, They don't have a finisher. यार ठीक है, टाइम लगता है चीजें। चेल्सी के पास कौन सी चीजें हैं यार? चेल्सी का फिनिशर कौन है? अबे क्रिएटर ही मिल जाए उनके पास, वो बहुत है। Sterling, yeah, is such a big money signing. यार देख, एक सेल्फिश होता है, एक सेल्फिश एसओबी होता है। वो सेल्फिश एसओबी है। But why are you so anti Sterling नहीं, इट्स these नॉट अबाउट days? बीइंग एंटी स्टर्लिंग, इट्स नॉट अबाउट बीइंग एंटी स्टर्लिंग और एंटी और प्रो रोनाल्डो काइंड ऑफ अ थिंग। इट इज व्हाट आई हैव सीन, इट इज व्हाट यू हैव सीन। मैं स्टर्लिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, स्टर्लिंग शायद बहुत अच्छा प्लेयर हो,
है एक्चुअली में, ना होगा नहीं, अगर नहीं होता तो इंग्लैंड की टीम में नहीं खेल रहा होता है, लेकिन वो एक सेल्फिश बंदा है फील्ड के ऊपर, वो वन मैन आर्मी सोचता है अपने आप, जहां पे ड्रिबल नहीं करनी, कल के गेम में भी जहां पे ड्रिबल नहीं करनी थी, वो उसने 1 सेकंड एक्स्ट्रा ड्रिबल और उसका वो शॉट ब्लॉक हो गया था, वरना उसका बहुत अच्छा गोल था, एक ड्रिबल एक्स्ट्रा थी उसकी इन द बॉक्स, वो एक ड्रिबल अगर वो कम करता वहीं से उसी टाइम पे पुल करता ट्रिगर, गोल था। नहीं, उसने एक ट्रिकरी एक्स्ट्रा करनी है, So, कर लो, फिर तो गोल तो होगा ही नहीं ना। but right now, if you talk about the table, हाँ Chelsea is leading United by a point after 10 games, right? हाँ, तो तेरे को So लगता है इस Chelsea टाइम पे, is currently in तेरे को लगता है 10 गेम के बाद भी टेबल, हम इतने साल से प्रीमियर लीग देख रहे हैं, 10 गेम के बाद भी कोई obviously. No, I'm not saying that the table is going to यार remain the एक same. I'm पॉइंट, not also saying एक that पॉइंट, Arsenal is वन going to be. पॉइंट, 1 पॉइंट मींस नथिंग इन द प्रीमियर लीग, एंड आज के टाइम पे आई थिंक सो No, टॉप I, 6 I'm trying to आज, I'm trying to focus on one point. I'm trying to focus on one point because they are at such a position, fourth or fifth, and with 1 point a gap. What are the stakes for this game? वेरी हाई। Do you think both the teams can actually allow and go out for a draft draw? नहीं, अगर कर दिया तो देन दे आर आउट ऑफ द टॉप 2 रेस, अभी तो वो रीच में, अगले हफ्ते तक वो Right. रीच में भी नहीं मिलेगी, until unless any, and because ये हमें पता है कि पेप गार्डियोला is not going to be lenient, and neither इस टाइम पे They, आर्टेटा is। obviously, we have seen that City is now going to be on a run after हाँ losing that game. They'll एग्जैक्टली, go on a run. सिटी विल बी ऑन अ रन, आर्सेनल इज ऑन, हैज बीन ऑन अ रन व्हिच नोबडी एक्सपेक्टेड, 10 गेम में 11 गेम में एक लॉस है, जो किसी ने सोचा नहीं था। सिटी द सेम थिंग, 1 लॉस आफ्टर 11 गेम्स, ठीक है, Right. एक एक्स्ट्रा ड्रॉ है, शायद सिटी के पास एक्स्ट्रा ड्रॉ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी तुम अगर देखो, अगर अगर तुम देखो, आर्सेनल, सिटी, स्पर्स, चेल्सी, यूनाइटेड, 27 पॉइंट पे आर्सेनल है, चेल्सी इज ऑन 20 पॉइंट्स, Thank you. यूनाइटेड इज ऑन 19 पॉइंट, 6 पॉइंट का डिफरेंस है साहिल, हमने इतने साल प्रीमियर लीग में देखा है कि वो 6 पॉइंट It's nothing. It's दो गेम का, nothing. But दो गेम, again, I think एक ही टीम है इन सब में से, एक ही टीम है जो एक रन पे जा सकती है और वो है सिटी. I don't think so. और इनमें से कोई भी एक रन पे जा सकती है. But regarding the next game, I still favor Chelsea. At home, Chelsea is always tough to beat. नहीं, अब I वो would say Chelsea अब वो or a draw. स्टैम्फोर्ड नहीं है यार, अब वो स्टैम्फोर्ड ब्रिज नहीं रहा, स्टैम्फोर्ड ब्रिज वो जो था ना वो नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ ड्रॉ। Let's अगर ड्रॉ let's हो, see. और अगर ड्रॉ होगा तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी, दोनों में से, दोनों सेट ऑफ फैंस फॉर मोर ऑल्सो, Exactly. है ना। Exactly. तर